Yes, sir. This meeting is being live. Yes, sir. Yes, we can do it. सर बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा सर. अच्छा, आई हैव माय ओन चैनल आल्सो, अगर उसके ऊपर भी जा सकता है ये? सर मैंने अभी आपसे जो ना एक लिंक शेयर किया है सर, आप उसमें जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो उसको कर सकते हैं सर. कहाँ पे शेयर हुआ है वो लिंक? चैट मैं सर ये सर व्हाट्सएप पे किया है सर आपको. व्हाट्सएप पे किया है जी. अब उसको क्या उधर इसको मैं अगर अपनी आईटी टीम को दूं तो वो करेगी, इसको उधर शेयर कर दे? सर बस इसको जो है ना वहां से जो ना ये लिंक है आपका यूट्यूब लाइव है, आप उसको जो है ना बस शेयर करेंगे तो वो ऑलरेडी प्रीव्यू भी दे देगा और लोग उससे कनेक्ट भी हो जाएंगे सर. लेट मी गिव इंस्ट्रक्शन टू माय ये जो टीम है ना आईटी की मेरी, उसको जी मैं सर. जी इंस्ट्रक्शन दे दूं कि दे कैन डू दैट. ठीक है सर. मुराद साहब यू आर लुकिंग ग्रेट सर. थैंक यू सर. माशाल्लाह सर, सुबह में उठा देता हूँ सर आप लोगों को सर, गलत करता हूँ ना सर. नहीं सर, ये तो हमारा ऑफिस का टाइम है सर. अस्सलामुअलैकुम फैसल, ये आपको YouTube का एक लिंक मैंने शेयर किया है हमारे YouTube चैनल पे, इसको अगर आप अपलोड कर दो आई विल बी ग्रेटफुल. और इसको जो भी लाइव अगर करना है तो उसको लाइव कर देना. मैं इस ट्रेनिंग सेशन में हूँ, so I don't think I can help you out more. I won't be receiving your call. Thank you. Sorry, I just asked my team to do so. Okay, now are we ready or still we are? आपको मिल गया वो रिसीव हो गया लिंक आपको? हाँ, लिंक रिसीव हो गया and I've sent it to my IT team. They will be uploading or whatever they will be doing. No issue. ठीक है सर. बिल्कुल सर, वी आर लाइव सर अल्हम्दुलिल्लाह. अब मैं जो है ना वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सर हैंड इट ओवर टू यू सर. आई विश यू गुड लक सर. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Let me welcome you all in this, of course, training program on art of public speaking, and it's one of the most important topic, or even those who aspire or desire to be a public trainer or motivational speaker or corporate trainer or any field ke andar, even if they are into their profession also, what they need is they need to learn the art, how they can speak, how they can move forward, how they can express their views, how they can express their learnings, knowledge, experience. और this is very much important कि उसका पूरा road map और pathway देना बहुत ज़रूरी है. So this is one of the important topic. I'm really lucky that Basit is on board, and Basit asked me for any of the training program. He requested for this particular topic. I said, okay, no issue. I can share my personal experience because I'm into this training for last almost 24 years. Trained almost 1 lakh participants across the country, 53 cities I've touched. I've been into public speaking. I've been into one-to-one training programs. A lot of initiatives have been taken. Most important is basically the consulting work which I'm doing, because I supplement all these things all together. So before we move on, let me go through next slide, please. Let's move on. बासित नेक्स्ट स्लाइड जरा कर देना, कंट्रोल आपके पास है. ठीक है सर. I normally start with my vision statement. Nothing can withstand the power of determined and resolute mind. Barriers falls, everything comes. If possibly inspired, very gifts of heaven open. So what I'm here is, I'm not here to teach you anything. I'm here to learn from your experiences. And of course, we got lean participants. So those lean participants will definitely add value. We'll try our level best कि जितना ज़्यादा dialogue हो सके आपस में करें through the social media, through this Zoom. This is what my desire would be. और इससे जो आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं या चीज़ें इनिशिएटिव आपके ज़हन में हैं, प्लीज़ उसको मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा. और प्लस ये टू वे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक दूसरे को साथ लेके चल सके और एक दूसरे को समझ सके और सारे बैरियर्स जो हैं वो रिमूव कर सके.
Everybody have its versatile experience here. Murad Saab hain, over 10, 20, 30 years of experience may be there, and we have Freya on board. Again, more experience would be there इंशाल्लाह ताला जो उनका है, और प्लस कुछ मेरा भी 24 साल का तजर्बा है. तो इस सारे तजर्बे को बासित का भी, if not wrong, more than 15, 20 years are there, if I'm not wrong. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. 25 years. So let's use this 100 years of experience and barriers जितने भी हैं वो कर दे, और you need to give me time, that is important. और वो टाइम क्या है? वो टाइम ये है कि अगला 1 घंटा, सवा घंटा, रादर तो सवा घंटा रह गया है, अपनी जिंदगी का मुझे देना है आपने, और समझने की कोशिश करनी है what are the arts of public speaking, how we can become a public speaker, how we can motivate people, how we can interact people, how we can express ourselves. That is very much important. So moving forward, just next slide, please. Okay, this is brief introduction of my institution called Asian Competitiveness Institute. We are into HR consulting as well as lean productivity quality की consultings के अंदर. Beside this, we also work for training initiatives, in-house public sessions and all that. We develop model companies in Pakistan. We are the only institution who have performed and delivered practically, and practical case studies are available in our trainings, और वही हमारी सक्सेस भी है ट्रेनिंग की भी और कंसल्टिंग की भी, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग होता है. सो कीपिंग इन व्यू दैट इन माइंड, एसीआई जो है पिछले 10-12 साल से काम कर रही है, और ये जितनी भी सर्विसेज हैं, we keep on adding value to the public, we keep on adding value to the private institution as well. दोनों साइड पे हम लोग we are working, and so far we have trained over 7,000 companies and over 200 plus model companies जो है वो हम डेवलप कर चुके हुए. Few of the model companies pictures are there आपके सामने, जिसमें best practices आपको नजर आ रही होंगी. These are the best practices which we transform. We change the set mind of people who are working in the industry, practically transform them, और reality के अंदर वो company itself speaks, the area itself speaks, even the department itself speaks. So that is very much important, because becoming a public speaker is very easy, learning from maybe from YouTube or maybe from Facebook or somewhere. लेकिन उसके पीछे प्रैक्टिकल बैकग्राउंड होना, प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस होना, प्रैक्टिकल स्किल्स होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि एग्जांपल जो दी जाए विद मोर एनर्जी और कॉन्फिडेंस दिया जाए. So that is what ACI reflects. It's not only the training program which we have, but also the practical work in form of consulting in the corporate sector. That is the reason that we conduct various training programs. Next, please. Now, this is my brief introduction. I am basically CEO of Asian Competitiveness Institute. I'm also Chief Operating Officer of Insaf Online, one of the online Insaf services which we are coming up with. Very, very innovative program. I'm one of the director also that, and I'm also director of Positive Pakistan, one of the initiative of youth. और इसी तरह I've been working as a lean process improvement consultant with Chemionics, USAID के साथ भी. और अगर मैं पिछला करूं तो I was former Deputy General Manager of National Productive Organization and so on and so forth. These are my credentials, and I've already discussed a little bit. So let's move on. That is very much important. Next. Now, I would request 3 questions to the participant. The first question is your name and the department you represent, whatever it is. There are 2 lean participants now. I hope more will be joining us. Second question is, please click, Basit, click kar dena. Your job background, that is important. Ki what is your background, ताकि ये मैं उसी के मुताबिक कर सकूं. और the one thing which I would like to know is your own quality you are proud of. Make sure कि ये जो own quality you are proud of, write it down in the chat box, because I want to see the quality, and that quality how I can use in future, and especially in सवा घंटे के अंदर मैंने discuss करनी है. तो मुझे पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे 2-4 participants हैं, जितने भी participants हैं, उनको हम कैसे जो है वो उनकी quality क्या है. So over to Murad Saf, ladies first rather. Let's start with for the 3 questions. You got 1 minute to introduce yourself, please.
And of course, I would request your Assalamualaikum. daughter to introduce herself also with 3 questions. Assalamualaikum. My name is Faria Hasan. I a part of Alpha Educational Network. I'm a counselor by profession, and my background in this is that I've done NLP, I've done a lot of counseling courses, I've done hypnotherapy, I've done career counseling, I've done life coaching, and I've been doing it for the last 15 years, 10 years. Before that, I'm also a remedial therapist and a teacher trainer. And I've been working for the last 38 years in the field of education. I'm in education in the last 38 years also. And my biggest quality, I feel, is empathy. Very good. That's great. We welcome you formally, or I can see more participants are there now, mashallah. So Murad Saab, I will be grateful if you can share your three questions are important, and then we will move on to a little daughter also. Thank you. You will be asking your name. Okay, Murad Saab can hear us or not? Again, if he's not available, can we move on to the next participant who can give answers of three questions? Can you hear me? Okay, so let's start from our young daughter is on board. So let's see how she's going to answer this. This is very much important. Ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. How are you? I'm fine. So can you give 3 answers right now? Your good name and your study, where you are studying right now, and of course in which class you are, and what is the quality which you are proud of? School name also you can come up with. I am studying in Delta, the school. I am in grade 4. My full name is Sofia Bassett. My job background is I am in learning stage. I'm in a learning stage, and inshallah ta'ala I will be better in it. And my own quality I am proud of is that I am doing my best. Okay, that's great. So you are doing your best. Wow, you will be continuing. We welcome you formally in this session now. So Muhammad Ali is Thank you a lot. Sure, my pleasure. So Muhammad Ali is on board. Let me request Muhammad Ali. I would request you to please answer these 3 questions quickly and write the quality on the chat box. Thank you, Sabah, we are coming up with you too. So I would request Muhammad Ali to please, if you are hearing, please respond. If not, so I would request anyone can raise the hand, and Basit can, as a host, can allow him or her to introduce quickly so that we can save time. We have less time. I have to move forward quickly. Ji, Muhammad Ali. Assalamu alaikum. Can you hear me all? Yeah. Thank you so much. I'm Muhammad Ali. I'm basically an HR professional. I have about 14 years of experience in HR. I have worked with Army Welfare Trust, with our interactive group of companies, the US Embassy, and now I am basically associated with Micro Merger Private Limited. This is my job background, and the department I represented is the HR department. I'm right now leading the department. I will write up the quality in chat as well. And thank you so much for giving us your time for your beautiful insight on the topic. Thank you. That's great. The quality which you are proud of, can you write it on the box, basically? Yes, sir. Please. Muhammad Ali, can you write your quality which you are proud of? I mean, we would love to see what your quality is. Improvisation. Very good. That's great. So let's move to the Sabah Khan. We welcome you formally in this session also. Can you hear us? Yes, I can hear you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I am Sabah Khan, and I work for my core department area is quality assurance and project management. And my job related background is also belongs to monitoring and evaluation, quality assurance in the education sector and the development corporation. I have overall 9 years of experience in that.
MashaAllah, that's great. We welcome you. And what is the quality which you are proud of? I'm very optimistic, so I'm proud of being an optimistic person. Okay, that's great. So you are optimistic in nature. That's great. Basit, can you come up with your introduction also, if no? सर बिल्कुल सर, मैं सर कैन यू प्लीज अलाउ मी, एक गेस्ट आए हैं मेरे साथ ऑफिस में यहाँ पे, तो अगर आप बोलें तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करा दूं सर मुझसे पहले, अगर आपकी परमिशन है। या प्लीज ये लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अदनान अजीज है, मैं ड्राइविंग करता हूँ और मेरा शौक है पढ़ना, कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। ये तो डिजायर बहुत अच्छी डिजायर है, पॉजिटिव डिजायर है जी। और मैं सीखना चाहता हूँ कि बोलते कैसे हैं। अच्छा, चले, ये तो अच्छी बात है। दैट्स ग्रेट। जी जी। Okay, that's great. Any other participant on board? Seher Tahir is there. Haider Khan is also there. So we have number of participants. हैदर खान इज अ वेरी गुड स्पीकर सर। हैदर साहिब जरा कुछ बताएं अपने बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम। और दिखा भी दीजिए अपने आप को। अच्छा, दिखाना तो खैर, बासित, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, sir, for your time. My name is Haider Khan. I am representing Human Resource Department in Aaj News as Manager HR. I have 15 years experience in HR. और I'm certified human resource professional, career counselor. I'm student of Basit Rana, और he is a good friend of mine. और जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला और सीख रहा हूँ, और ये एक अपॉर्चुनिटी है which I've seen के बिल्कुल हमें the art of public speaking which is very much needed in the market in our life also. तो हमें पर्सनल लाइफ में भी और हमें प्रोफेशनल लाइफ में भी एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होना चाहिए, हमें बोलना आना चाहिए, जैसे अभी भाई ने बताया कि किस तरह बोलते हैं, ये भी एक आर्ट है। So we are here to learn from you, sir. Jazakallah, Jazakallah. Thank you very much, and we welcome your quality which you are proud of. Can you write it? My quality is I'm a good learner, sir. Learner, with a good okay. personality. Yes. हर स्टेज पे बहुत जरूरी है कि everybody thinks even after having versatile experience we keep on learning, and person like me is still learning, and I will be learning from you people also. Okay. Thank you, sir. Any other participant which would like to introduce quickly before we move on, because we have less time? Sir, here's Murad Memon. Okay. Hello, sir. Can you hear me? I can hear you, Ji. Yes. So my name is Murad Memon. I'm working as the Director Quality Enhancement Cell at ISRO University, Hyderabad since 11 years. Yes, Quality Enhancement Cell. So my work is with the HEC's targets, which are given to the universities through the QEC, because they are the self-assessment reports of the programs, assessment from the students, to get feedback from the students, faculty, alumni, and the other things that we have to run. Or quality which you are proud of, quickly. Yes. Quality which you are proud of. Any quality, your own quality which you are proud of. आपके अंदर कुछ ऐसी quality होगी जिसके ऊपर आप. Yes. Quality is what do you want? What do you want now, and what do you want to be? That is, to me, this is the quality, because there is no such definition of the quality which I can define that this is the quality. Every person. It's something like I am honest person, I am optimistic person. Look at the chat box. You find a lot of qualities there. I am visionary leader. मैं दूर का सोचता हूँ, दूर की जांचने की. Yes, you are asking about me. Yes, sir. बिल्कुल ये है कि मैं तो कहता हूँ कि जो चीज आप कह रहे, जो आप कर रहे हैं, वो आपको करना चाहिए, और बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से आपको हुक्म है उस तरीके से आप करें। तो ये है कि दूसरी बात है कि मेरा भी यहाँ पे रोल ही होता है, विजनरी रोल है यहाँ पे, और मैं अपने मीटिंग्स के थ्रू जो है वो यूनिवर्सिटी को बताता भी रहता हूँ कि जी आपने जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ना और क्या चीज़ें हम लोगों ने करनी है। तो बिल्कुल यही है, पैशनेट है क्वालिटी में, और क्वालिटी में क्या बल्कि लाइफ के हवाले से भी, कि लाइफ में जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो बेहतर क्वालिटी की चीज़ें होनी चाहिए, और जो हम मतलब आगे का सोचना चाहिए हमें। जी सर। वेरी गुड। सो आप आगे का सोचते हैं, वेरी गुड। Okay, can we move on to the introduction से थोड़ा सा बाहर आ जाए, because I think a lot of participants have joined now, so we have to move little bit quickly because time short है.
So let's set the rules now. All are here now. Let me welcome you all formally once again. And I'm really honored to have people with diverse participants are there. Got an idea. We got university background also. We got industrial background, corporate background also. Mashallah, everywhere we are or the participants are from. So now moving forward, let's set the rule for this session. First rule would be we started on time, almost 9 o'clock. Can you click one by one, Basit, so that we got the controls so that we can move? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Can you click, please? Yes, sir. I can click it. Okay. We started on time, only one conversation, listen for understanding, be open to new ideas. Now, these are the rules we are setting for this. Ask why wherever necessary, use the chat box because we are not having one-to-one interaction through our training program, but at least through this particular Zoom we are having. So chat box could be something which you can drop if you have any question or you want to put why. Don't repeat points already made. Everyone had to participate in it. We will try our level best कि सबसे input ली जा सके, सबको engage किया जा सके. So no rank, no ego. Remember the red keywords. जहाँ पे red keywords आए, try to memorize them. और please अपने mobile phone side पे कर दें. वैसे तो मैं समोसा पार्टी करवाता हूँ अगर ये 1-to-1 सेशन होता, लेकिन समोसा पार्टी हो नहीं सकती. So at least ये है कि I would request कि switch off your mobile phone. अपनी जिंदगी के 1 घंटा मांग रहा हूँ. So let me check how many are with me. Can I check this through yes box? Are you with me with yes on the chat box? Yes, sir. Yes in the chat box, please. Okay, so we got first yes. Let me see how quickly this chat yes aata kaise, kitne ko active hai. So all are active here. Very good. That's great. So this is the energy I need when I put any questions. So इससा का मुझे जो है वो आना चाहिए आंसर yes वाला. ठीक हो गया? So let's move to the next slide. I'll be grateful. Basit, can you come up with next slide? Okay, now this is participation meter. Normally होता क्या जब भी आप इस का ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के करियर काउंसलर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो आपसे इंटरेक्शन भी और पब्लिकली भी कर रहे होते हैं, प्लस 1-to-1 भी कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन भी दे रहे होते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज के साथ भी इंटरेक्शन कर रहे होते हैं. तो ऐसे पार्टिसिपेशन मीटर में कुछ किस्म के लोग होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड जरा नेक्स्ट करना. तो उसमें से अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो से यस मींस नो और डोंट पार्टिसिपेट एट ऑल. क्लिक, कैन यू क्लिक वन मोर टाइम बासित? दे आर 40%. दे आर 40% नॉर्मली पार्टिसिपेशन में. कुछ होते हैं डोमिनेटिंग, जो डोमिनेट करना चाहते हैं. इन माय एक्सपीरियंस देयर कैन बी ओनली माय व्यू. सो व्हेनेवर यू कंडक्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम आल्सो आपको इस तरह के लोग ऑडियंस में मिलेंगे. ओनली पार्टिसिपेट इफ इट इज मी, राइट? जब आप अपनी बात करेंगे तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज उनको आप मौका दे दे, दे विल डोमिनेट. सिमिलरली नेक्स्ट इज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फैक्ट शेयर होते हैं, सम पार्टिसिपेटिंग, दे आर अबाउट 10%. और कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट होते हैं जो कैन यू क्लिक प्लीज बासित, जो एग्री करते हैं, जो आपने फैक्ट शेयर किए हैं, वो दे आर 5%. सो मेरा जो रिक्वेस्ट है इस मीटर को अगर आप देखें तो 40%, 45%, 10%, 5%, हम लोगों को एक ग्रेड पे आना पड़ेगा. वी नीड टू कम टू 1 ग्रेड. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. जो ना भी कर रहे हैं वो ऊपर से तो हाँ कर रहे होते हैं, अंदर से ना कर रहे होते हैं. कुछ डोमिनेट कर रहे होते हैं और कुछ फैक्ट्स शेयर कर कहते हैं हाँ ठीक है, कुछ सही कह रहे हैं आप. सो इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है. सो आई एम नॉट हियर टू टीच यू एनीथिंग. लेट मी टेल यू, विद 24 years of experience and the experience sitting in this whole session, around 10, 15, 20 participants, उनका collective experience करें तो we have 500 years of experience. So public speaking के अंदर हमें 500 साल का तजर्बा इस्तेमाल करना पड़ेगा to learn and to communicate and then to add value to others. That is very much important. So next slide please. So कुछ आपके views हैं, can you click please? कुछ आपके व्यूज हैं, कुछ मेरे व्यूज हैं और दोनों के एग्रीड फैक्ट्स हैं. इस एग्रीड फैक्ट्स के मुताबिक वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, वी नीड टू डिफाइन सर्टेन थिंग्स. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. नाउ कमिंग टू दिस स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्लाइड. यस, कैन यू सी दिस पिक्चर? आई वुड लाइक यू पीपल टू टेल मी व्हाट ही इज डूइंग बाय द वे.
cutting a tree? Yeah, you say yes or no. So I will come up with yes or no answer, because definitely you cannot explain into it. Is he cutting a tree? Yes. Okay. Yes. So he's एक बंदा मुझे नजर आया, और वो बंदा जो है वो ये दरख्त काट रहा था, इसको काम ये मिला, दिस इज जस्ट अ सिनेरियो आई एम कमिंग अप विद, काम ये चला, उसने शाम तक तकरीबन 30 से 40 दरख्त काटने हैं। मैंने उससे पूछा कि भाई ये तुम काट लोगे अकेले? मैंने कहा जी बिल्कुल काट लेंगे, कोई मसला कोई नहीं, मैंने अभी स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह ताला शाम तक ये सब दरख्त कट जाएंगे और यही मैं आगे कारोबार के लिए टिम्बर इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, मैं चला गया, शाम को जब मैं वापस आया तो पहला ही दरख्त वो काट रहा था। मैं पूछा उससे कि भाई सुबह भी जब आया था तो इसी दरख्त पे लगे हुए थे, शाम को आया हूं तो अभी भी इसी दरख्त पे लगे हुए हो, व्हाई दिस इज सो, कि ये क्या मसला है कि क्यों नहीं अभी बाकी और काट सके? कहते ये जो मेरे हाथ में आ रहा है ना ये तेज नहीं है। मैं कहा तो भाई तेज कर लो। कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। Now this is what surprising was. मैं कहा भाई टाइम क्यों नहीं? कहती मेरे पास टाइम नहीं है। So now this is what exactly happening with us when we talk about our industrial sector, when we talk about institution, उधर उनके ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो आरए को तेज करने के लिए जो उन्होंने स्पीकिंग करनी है, जो कम्युनिकेशन एंड लर्निंग करनी है, जो वैल्यूडेशन करनी है, दूसरे को मैसेज ट्रांसफॉर्म करना है, उसको पॉलिश करने का टाइम नहीं है। And they are still working hard into it. So this is what exactly happens with the industry also. जब industry के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, they are bogged down with the production, they are bogged down with the targets. और when we talk about learning and development, उस पे validation नहीं कर रहे होते। So now आज इसी पिक्चर के जरिए what I wanted to give you the message कि जब आप अपने अपने respective institution पे जाएं तो सबसे पहले importance of training, importance of capacity building, importance of public speaking, importance of communication effectively to the participant need to be determined कि ये जो आप learn कर रहे हैं, जो मैं अपनी knowledge transformation कर रहा हूँ, जो knowledge tacit knowledge को explicit knowledge के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। It's investment, it's not expenses. And again, if you do this investment, तो dynamics change हो जाएंगे दुनिया के भी, आप लोगों के भी, and we will add value to the organization which we are serving today. So learning and development is key to success. याद रखिएगा, and it is investment which we need to work with. Next, please. Now, what we are going to cover today, session contents. Now, I'm formally starting my session properly. I have divided this into two parts because of the shortage of time. Part one, I'm giving you formula before public speaking, that is formula for prior preparation, that is speaker के नाम से formula होगा, which I'm coming up with. You will be the speaker, इंशाल्लाह ताला, public speaker हो या किसी एक जगह पे कहीं पर भी आप speaking कर रहे हो, communication कर रहे हो. So speaker is the formula which I'm coming up. I'll go into detail. What does it mean? How it is reflected. Second thing which I'm coming up with is कि जब आप मैदान में उतर जाते हैं, मैदान में या स्टेज पे आ जाते हैं, तो उस वक्त आपने पब्लिक स्पीकिंग की कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट कैसे करनी है, अपने अंदर स्किल कैसे एनहांस करनी है, वो कौन से ऐसे फॉर्मूलाज हैं. कैन यू क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट. हाँ, हाउ टू स्टार्ट द पब्लिक सेशन, प्लीज पीछे आ जाए. दैट इज अ फॉर्मूला कॉल्ड ग्लॉस. I will be coming up with. Basit would be more excited because he attended my train the trainers program. जिसमें Dr. Kolb का जो ये मॉडल है, ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, which I'll be discussing कि how you can do the public session and start कैसे लेना है. And that powerful start के लिए formula है gloss. ये अब execution की बात हो रही है. And then of course I will be working with another formula when you are conducting a training program और पब्लिक सेशन, उसमें जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ वो ईज दे रहा हूँ. सो व्हाट यू नीड, टेंशन इसमें नहीं लेनी है. आई नो एवरीबडी हैव इट्स ओन कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स, दे बीन डूइंग इट. थोड़ा सा पॉलिश करना जरूरी है, थोड़ी सी कॉम्पिटेंस बढ़ाना जरूरी है, थोड़ी सी इफेक्टिवनेस लाना जरूरी है, थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है, अपने अंदर हिडन पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. नाउ दिस इज व्हाट आई वांट कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर हम लोग आप लोगों को फर्दर पॉलिश कर सके, so that you can speak well and understand well and then communicate whatever you have learned so far using all these three formulas.
ये 3 फॉर्मूले आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड क्रेडिट गोes to Basit for coming up with this kind of session where I'm interacting with not one person but over 15 institutions who will be working with the same formula for effective communication in future in that context. So starting from part 1, let's move forward. Next slide please. Okay, session के benefits क्या होंगे? Greater credibility which we'll be working with, कि कैसे credibility को enhance किया जा सकता है, capability कैसे enhance की जा सकती है, confidence कैसे build up किया जा सकता है, और consistency in speaking skills कैसे लाई जा सकती है. ये 3-4 benefit हैं 4 C's के हवाले से. So remember कि हम इस session से कोशिश करेंगे इसमें से maximum benefit उठाया जा सके, benefit लिया जा सके. Next बड़ा important है. Next is the I hope it's Giraffe, everyone is watching this. आप इसकी qualities या इसको अगर life से relate करें तो what do you relate with it? Any idea? Can anybody ideas chat box पे दे सकता है कि what is the idea behind the giraffe? What is good about this giraffe is? Any idea? Anyone? Its neck is tall and it can reach the trees and eat the leaves of it. Wow, so that means it's tall, over 18 feet tall, so it can eat easily. Can it drink water also easily? Yes. How it eats to water? No. That's pretty good. No, not easily. The Heather said very good thing कि can see far, ये दूर तक देख सकता है. तो पब्लिक स्पीकर जो भी बनेगा, यू गॉट द राइट आंसर, हमें दूर तक देखने की सोच पैदा करनी है. इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर, यू हैड टू प्ले अ रोल लाइक दैट. अपनी जिंदगी के अंदर आपको विजनरी होना पड़ेगा, दूर तक देखना पड़ेगा, अपने अंदर एबिलिटी ऐसी पैदा करनी पड़ेगी कि हम दूर तक देख सकें, ऊंची सोच पैदा कर सकें. हमारी यहाँ पे एक छोटी बेटी भी यहाँ पे है, वो आज से ही ऊंचा सोचने का सोच रही है. She will be thinking right from the beginning, yes, I would like to be a brain surgeon one day. She's thinking long. People who are sitting here will be thinking, I would like to be a public speaker one day. So this is what we want. We need to have encouragement within ourselves. अच्छा, एक और चीज जिराफ की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका दिल बहुत बड़ा होता है. Anyone knows why? Can anyone answer why दिल इसका बड़ा होता है? Anyone? Because it's kind. It's not kind. Why? दिल इसका बड़ा उसका नहीं होता, इसका size of the bill, दिल है, heart is big. This is what my question is. Why it is big? Bigger than a normal animal. अच्छा चले, I can answer this question. इसका दिल इसलिए बड़ा होता है, इस वजह से बड़ा होता है क्योंकि इसने पंप करना होता है ब्लड को टू द ब्रेन, एंड ब्रेन इज टू हाई. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को अपने अंदर पावर लानी पड़ेगी. जिस तरह का इसका जिराफ का दिल है, इस तरह स्ट्रॉन्ग दिल बनाना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करना पड़ेगा, अपने अंदर एनर्जी पैदा करनी पड़ेगी, ऐसा एटीट्यूड पैदा करना पड़ेगा कि हम दूर तक सोचें, ऊंचा सोचें, दूर तक देखें और उस दिमाग तक पहुंच सकें ताकि लिए हम कुछ ना कुछ अचीव कर सकें अपनी जिंदगियों के अंदर. So let me check. Are everybody is with me or not? Are you with me or not? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Can I see the yes? Okay, that's great. Yes, I need to check the yes every time because I hope nobody muted it. Okay, now this is the approach of public speaker today. Just think that you are on the stage or you've been elevated on the stage rather. जब आप elevate होते हैं तो आपको दूर तक लोग भी नजर आते हैं, दूर तक एनर्जी आपके अंदर आनी चाहिए ताकि ये वो पावर आनी चाहिए. जिस तरह इसके अंदर पावर है दूर तक देखने की, तो आपको भी नजर आना चाहिए. सो पब्लिक स्पीकर्स के लिए दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल व्हिच यू कैन कोरिलेट एंड बिल्ड द कॉन्फिडेंस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड for the next slide, I hope the concept is given. So let's talk about becoming a speaker. The prior preparation before the session, कोई भी सेशन आप पढ़ाने जाएं तो स्पीकर का फॉर्मूले के अंदर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इनकॉर्पोरेट होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन. आप जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, यस यू कैन डू इट वाला एटीट्यूड लेके आएंगे, देन ऑफ कोर्स आपकी
टांगे शिवर नहीं करेंगी। अभी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। आपने अपने अंदर की जो कॉम्पिटेंस है उसको जांचना है कि यस यू कैन स्पीक, yes you can deliver, yes you can communicate. So ये चीजें बड़ी important है. So first thing which I would request you people to come up with the self confidence. The second thing is powerful PowerPoint presentation and content. Session के objectives के साथ अक्सर क्या होता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटियों के स्पेशली प्रोफेसर्स की, या विद ड्यू अपॉलॉजी, वो एक स्लाइड के ऊपर कोई 10, 15, 20 जो है ना वो बुलेट्स डाल देते हैं. सो ट्राई टू अवॉइड दैट. मैक्सिमम 6 हो जाए, बहुत हो जाए 7 हो जाए, इससे ज्यादा बुलेट्स ना हो, और फॉन्ट इतना हो कि लोग समझ सकें, उसको जान सकें, उसको वो कर सके, जो है ना अंडरस्टैंड कर सकें. सो नॉर्मली होता क्या है, फॉन्ट ऐसा यूज किया जाता है, चीजें ऐसी की जाती है कि ना कुछ नजर आता है ना कुछ किया जाता है. सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब आप बनाएं, प्रेजेंट कर रहे हो, उसके अंदर आपको यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट, और ऐसे कंटेंट डालें जिसका वैल्यू फॉर मनी हो, लोग उसको पैसे भी देने को तैयार हो कि यार ये अगर मैंने प्रेजेंट किया ना, इंशाल्लाह ताला इस प्रेजेंटेशन से मुझे वो पैसे भी देंगे और वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा. सो कंटेंट नीड टू बी सिलेक्टेड एंड दैट नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्ली, ताकि लिए उसको बेहतर बनाया जा सके. होता क्या है, there are few institutions in Pakistan, without naming them, they run training programs, no doubt, but उनके content इतने powerful नहीं होते कि people are not willing to pay. So we need to work out on your content के best content दें, unique content दें, ताकि ये लोग उस तरह के ना दे रहे हों. होता इस तरह भी है, अगर टाइम मैनेजमेंट कोई पढ़ा रहा है तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर वही सेट मेथोडोलॉजी, सेट कंटेंट दे दिए जाते, कोई इनोवेटिव क्रिएटिव कंटेंट डाला ही नहीं जाता. लेकिन व्हेन आई सी international speakers, international trainer, they keep on adding value to these contents, ताकि ये लोग आते हैं और लोग भागते हैं, लोग जानना चाहते हैं और नॉलेज गेन करना चाहते हैं. और वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पावरफुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, विद प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होती है, फॉन्ट सही होते हैं, फॉन्ट के साइजेस सही होते हैं, और मिक्स सब चीजें नहीं होती हैं. दैट क्लैरिटी through the PowerPoint presentation is very much must, with the heavy content that gives you a good reflection of your topic or strength of your topic कि इस चीज के ऊपर आपका बड़ा बुरा है. जिस तरह भी करियर काउंसलर अगर हैं तो करियर काउंसलर को भी अपने कंटेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर वैल्यू फॉर मनी हो. जो करियर काउंसलिंग करने के लिए आए वो आपको पे करे कि भाई हमें इसके बाद हमें डायरेक्शन सेट हो जाएगी, इसको पढ़ने के बाद चीजें बेहतर तरीके से आगे चलेंगी इंशाल्लाह ताला. सो दिस इज द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग इज एम्बेड एंगेजमेंट टेक्निक्स. जब आप प्रेजेंटेशन यही बना रहे होंगे तो उसके अंदर आपने एंगेजमेंट टेक्निक्स को एम्बेड कर देना है. जिस तरह लेट मी कोट एग्जांपल ऑफ दिस सेशन आल्सो. शुरू में मैंने क्यों आपको जरा काटा हुआ चीजों को दिखाया, क्यों आपको जिराफ दिखाया. आई एम्बेडेड दीज 2-3 पिक्चर्स just to engage participant, know okay whether they are listening to me or not, and immediately उसका टेस्ट भी हो गया कि यार ये कैसे होगा, क्या होगा, और एकदम से आप लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया. अगेन एंगेजमेंट टेक्निक के अंदर मैंने आप लोगों की क्वालिटी लिखवाई. अगेन एवरीबडी वाज टाइपिंग इनटू इट चैट बॉक्स के अंदर, ट्राइंग टू टेल दिस इज माय क्वालिटी. सो दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट techniques. Now this was the engagement technique जो मैंने limited use की Zoom के अंदर. However, when you are coming up with your presentations और चीजें, उसके अंदर आप story के हवाले से कर सकते हैं, story के हवाले से कर सकते हैं, and then again games के हवाले से बात की जा सकती है, role play के हवाले से बात की जा सकती है. ठीक है. So there are lots of things which are there that need to be इसको करना बहुत जरूरी है. आप ये चीजें देख लें कि कैसे मैनेज की जा सकती हैं. एंड देन ऑफ कोर्स ऑडियंस एनालिसिस. दिस इज फोर्थ चीज. नॉर्मली क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स का ऑडियंस का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है. वो क्यों होना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए किन पार्टिसिपेंट्स को आप बोल रहे हैं. जिस तरह अगेन इसी कोर्स की इसी सेशन की मैं मिसाल दूंगा. चाहे हमने लिमिटेड किया 6-8 लोगों से, लेकिन बट वी ट्राई टू नो कि हु आर द ऑडियंस सिटिंग. क्वालिटी एश्योरेंस के लोग भी बैठे हुए थे, कुछ और लोग भी बैठे हुए थे. तो अब हमें ये पता चल गया कि टू हुम यू आर कॉन्टैक्ट विद. अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर एग्जांपल देता हूं, उसकी मुझे पता होगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग बैठे हुए. सो ऑडियंस का जानना जांचना, उसके मुताबिक एग्जांपल्स देना बहुत जरूरी है. लेट मी गिव यू माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू इट.
जिस सेक्टर के अंदर भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जाता हूँ तो उस सेक्टर में लकीली मेरा कंसल्टिंग वर्क होता है और मुझे पता है उस सेक्टर के अंदर उस स्पेसिफिक, लेट्स से इफ आई गो टू इंजीनियरिंग, लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर और वहाँ पे ट्रेनिंग करवाने जा रहा हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पता है और जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट आए वो किस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, क्या सुनना चाहते हैं, दैट आई ऑलरेडी नो थ्रू दी कंसल्टिंग वर्क, सो दैट इज एडेड वैल्यू। सो होता क्या है कि जब वो सुनते हैं और वो कहते हैं यार ये तो हमारे मसले की बात हो रही है, हमारे एग्जांपल्स दी जा रही है, तो ऑटोमेटिकली उनकी एंगेजमेंट और बढ़ जाती है, ऑडियंस जो है वो आपका साथ देना शुरू कर देती है, आपको उनका नोटिंग हेड नजर आना शुरू हो जाता है, दे कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट टू। सो आफ्टर दैट वी हैव K, that is knowledge with practical experience is important. अगर आपके पास knowledge है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये नॉलेज के बगैर आप पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा डिफरेंट चीज़ों के अंदर। जो भी आपका सब्जेक्ट है, कोर कॉम्पिटेंस है, कोर सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपकी नॉलेज और डेप्थ नॉलेज होना और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। उससे एक तो जब आप स्टेज पे जाने वाले होंगे, खड़े होने होंगे, तो आपके पास पीछे होगा यार ये तो मेरा अपने घर का सब्जेक्ट है, मसले कोई नहीं है, मजीद आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रिप्ड हो जाएगा। इस नॉलेज को गेन करने के लिए आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। अगेन यू कैन गो टू यूट्यूब, यू कैन गो टू बुक्स एंड कर सकते हैं, लाइब्रेरी के हवाले से अपने आप को एंगेज कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ इटसेल्फ इज अ नॉलेज विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो प्लीज इस दोनों चीजों को एमलगमेट करके यू कैन कम अप विद डू। अच्छा, फिर जब आप सेशन बना रहे हो तो उसके अंदर एनर्जाइजर्स और आइस ब्रेकर्स जरूर डालें। होता क्या है कि एनर्जाइजर्स नहीं डालते ना, एनर्जी नहीं इम्बेड करते तो मजा नहीं आता। सो आइस ब्रेकर्स, एनर्जी, जब 1-to-1 सेशन हो रहा हो उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एनर्जाइजर्स डलने चाहिए। ये एनर्जाइजर्स जो है ना वो आपके पार्टिसिपेंट को सोने नहीं देते। सो आइस ब्रेकर्स बहुत जरूरी है। इंटरेक्शन करने के लिए ये एनर्जाइजर जरूरी है ताकि ये लोग बोले, उनका अंदर जो भी हिचकिचाहट है उसको खत्म किया जा सके। इन आर ट्रेन दी ट्रेनर्स प्रोग्राम हम लोग ये बड़ा इफेक्टिवली यूज करते हैं और होता क्या है कि 80% के करीब पार्टिसिपेटिव अप्रोच होती है और पार्टिसिपेंट्स ने सारे काम करने होते हैं। बासित हैज गॉन थ्रू दी ट्रेनर्स प्रोग्राम, ही नोज कि हमारी एंगेजमेंट कितनी ज्यादा होती है उसके अंदर। वी आर नॉट लाइक टिपिकल टीओटी जो नॉर्मली अभी मार्केट में हैं भी, विदाउट नेमिंग देम, जो कि ज्यादातर फॉर्म्स वगैरह फिल करवाते हैं, सेल्फ असेसमेंट करवाते हैं। हम लोग हिस्सा नहीं कुछ करते, हम ये कहते हैं भाई आपने प्रेजेंट करना है। इफ यू आर विद अस फॉर 4-5 days you have to present, take a topic, present it, और उसको गाइडलाइन प्रेजेंटेशन के मुताबिक दे रहे होते हैं, जो आने वाले अगले पार्ट के अंदर भी मैं ये देने जा रहा हूं ताकि ये आप लोगों को पता चले कि हाँ भाई इसके अंदर हमें प्रैक्टिस करनी है, इस फॉर्मूले को बैक इन माइंड रखना है। अगेन व्हेन यू आर सेटिंग अप दी प्रेजेंटेशन, रूल्स और नॉर्म्स रूल सेशन के आप प्रिपेयर कर लें पहले से। होता क्या है, अक्सर आप जब रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं सेट करते तो एवरीबडी विल चिप इन, वो बीच में से उठ के बोलना शुरू कर देगा, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, आपको जो है वो चीज़ों को परेशान करेगा। फिर अगर आपने रूल सेट किए हैं ओनली वन कन्वर्सेशन, इफ यू जस्ट गो बैक टू माय स्लाइड्स तो आपको याद होगा कि मैंने रूल्स, ग्राउंड रूल्स यहाँ पे सेट किए इस सेशन के कि ओनली वन कन्वर्सेशन, लिसन फॉर अंडरस्टैंडिंग, बी ओपन टू न्यू आइडियाज, आस्क व्हाई वेयर नेसेसरी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट इट इन द चैट बॉक्स। और कुछ लोग भी आपको डिस्टर्ब करते हैं जो कि जानबूझ के आपको नीचा दिखाना चाह रहे होते हैं जब आप पब्लिक स्पीकिंग में आते हैं। बल्कि हमारे ये ट्रेनर्स प्रोग्राम में हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल का पूरा एक मॉड्यूल बना हुआ है कि मुश्किल लोगों को कैसे हैंडल करना है। तो मुश्किल लोग उस वक्त हैंडल हो जाते हैं जब आपने ये रूल सेट किए हों, और कैसे टैकल किया जाता है वो बड़ी डिटेल बात है, लेकिन ओवरऑल जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हों, जब आप अपनी प्रेपरेशन कर रहे हों बिफोर गोइंग टू द स्टेज, दीज आर दी थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जो आपको अपने साथ लेके जानी है, अपने अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर एम्बेड करनी है रूल्स और रेगुलेशन समेत, ताकि ये आप कॉन्फिडेंटली जाके आगे डिलीवर कर सके। सो दैट वाज द part 1. Now we will move to the another part. Next please. That is part 2. I have left with less time, but definitely I will try to cover these two parts with few activities also ताकि ये लोगों को और engage किया जा सके। Before we start part 2, let me check how many of you are with me. Say yes. Are you with me?
Say Yes. Okay, that's great. I can see yes once again. Active yes. Any question in part 1 you have? अगर कोई सवाल करना चाहे प्लीज रेज योर हैंड ताकि ये हम उसको आंसर करके आगे चलें, क्योंकि ये जो सेशन है बड़ा कंफाइंड और छोटा सा टाइम फ्रेम के लिए, 1.25 घंटे का सेशन था. तो I just wanted to know any question, or we can take the question in the end. Can we go in the end if you allow me, or you want me to answer the question part 1 के pertaining in the end? Okay. Let's see. Voting पहली आ गई, मुराद साहब ने कहा end पे. Next see. Anyone sure in the end? Very good. That's great. Ali ने भी कह दिया. What is any other? So we got 2 votes right now. End. Amber is also there. Welcome, Amber. Okay. Majid says in the end. Okay. Sabah says in the end. Okay. So this means everybody says in the end. So we will continue. I hope everybody is understanding. If you people are understanding well my voice, my presentation, so please write it down. Yes, you are understanding. Can I see the yes? Okay, so this means understanding is clear, clarity is there. Yes, yes, yes. So everybody says yes. So we are moving forward with this. Now moving to the next. अब आगे जी, अब ये बड़ा जबरदस्त part 2 है जिसके अंदर आपको स्टेज पे चढ़ना है, और स्टेज पे चढ़ के क्या करना है, that is get attention. How to get attention of every participant, इसके ऊपर आपको सोच विचार करनी पड़ेगी. Every trainer have its own methodology जो कि वो यूज करता है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर टू गेट दी अटेंशन. जिस तरह मैंने अभी आपको ऊपर तस्वीर दिखाई, जिराफ की तस्वीर दिखाई, काटते हुए तस्वीर दिखाई, जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ एवरीवन. कुछ लोग छोटी सी मूवी क्लिप दिखा देते हैं टू गेट द अटेंशन. कुछ लोग स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. कुछ ऐसे सेशन है मैं जब पढ़ाता हूँ, I start with the story, I generate the story, and then I correlate that story with maybe export import figures. उसके अंदर न्यूमेरिक चीजें डाल के लोगों को कहता हूँ कि जी खर्चा कितना था, वो कितना था, इतना खर्चा हो गया, इतनी आमदनी थी. वो एकदम से वो जब ये चीजें हम न्यूमेरिक फिगर्स और चीजें करते हैं, उनकी टेंशन ग्रैब हो जाती, कहते हैं तो हमारे घर की बात हो रही है. बाद में उसको कोरिलेट कर देता हूँ मुल्क के साथ. सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. सो एवरीबडी हैव इट्स ओन वे जो प्रेजेंट करना होता है. सो रिमेंबर दिस ग्लॉस फॉर्मूला व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग. पहले काम करना है आपने गेट दी अटेंशन. शुरू के 5 मिनट आर वेरी मच क्रिटिकल. अगर आपने उस 5 मिनट में पार्टिसिपेंट्स की अटेंशन ग्रैब कर ली तो समझ लें कि अगले जो 45 मिनट आपने गुजारने हैं डायनामिक्स चेंज होंगे. अच्छा, अब इसमें मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, ये जो एडल्ट लर्निंग है, जो हम एडल्ट लर्निंग के ऊपर बात करें, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, सीनियर्स लेवल के ऊपर, उसके अंदर तो ये चीज बड़ी अडॉप्ट की जाती है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोफेसर और स्कूल टीचर, उसके अंदर अटेंशन वाली बात नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स वैसे बांध के बिठाया होता है उनको. सो व्हाट वी नीड इज हम उसके अंदर भी अपनी इन्हीं स्किल्स को एम्बेड करते तो डायनामिक्स चेंज हो गए. आई जस्ट हर्ड अबाउट वन ऑफ द टीचर्स ट्रेनर आल्सो. टीचर्स को अटेंटिव करवाने के लिए बच्चों को भी यू नीड टू गेट देयर अटेंशन, एंड दैट 5 मिनट्स आर वेरी मच क्रिटिकल. दैट 5 मिनट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड देन वंस यू प्ले योर रोल, 5-10 मिनट के अंदर अगर अटेंशन उनकी आ गई और वो आपकी तरफ गामजन हो गए, आपकी तरफ सोच में पैदा हो गए, ये गेट अटेंशन का ये भी हो सकता है जिसका मैंने एक जुमला बोला, आपकी जिंदगी का 1.25 घंटा मुझे चाहिए. अब इस वर्डिंग से क्या हुआ, एवरीबडी इज बिट यार थोड़ा सा टाइम दे ही देते हैं, हो ही देते हैं. तो व्हेन यू स्टार्ट रिक्वेस्टिंग एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, एज अ पब्लिक स्पीकर, ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ राग़िब होना शुरू होंगे, आपकी तरफ लिसनिंग की जो एबिलिटी है उसको उजागर करने की कोशिश करेंगे, और फिर जो है उसको चीजों को बेहतर बनाया जा सकेगा. अच्छा, लिंक विद द प्रीवियस सेशन. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. आप देख रहे होंगे कि हर स्लाइड के अंदर आई एम लिंकिंग विद पार्ट 1, आई एम लिंकिंग सर्टेन थिंग्स विद माय रूल्स एंड रेगुलेशन, आई एम लिंकिंग विद द पिक्चर्स आई हैव शोन. एवरी टाइम आई एम गिविंग लिंक्स. व्हाई आई एम गिविंग लिंक्स? ताकि आपको पिछला भी याद रहे, अगला भी याद रहे, आने वाला भी याद रहे. प्रायर नॉलेज टेस्ट भी किया, कितनों को पता है कि ये होता है. जिराफ के बारे में पूछा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली पूछा, हाँ जी बताएं, ये जी प्रायर नॉलेज क्या था, प्रायर नॉलेज क्या है, पहले कितनों लोगों को पता है इसके अंदर क्या है, लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है जिराफ से. सो जिनको नहीं पता था उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जिनको पता था उन्होंने जरूर आंसर किया. हमारी बेटी ने भी बड़ा जबरदस्त
आंसर किया कि उसका दिल बड़ा होता है, मीन्स हमें भी अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा. दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग शी हैव सेड सो फार. सो वी नीड टू वैल्यू सच नॉलेज, वी नीड टू अप्रिशिएट सच नॉलेज, वी नीड टू इंकरेज दैट सच नॉलेज. सो फर्स्ट 10-15-20 मिनट के अंदर जब आप ग्लॉस की इनिशिएटिव ले रहे हैं, गेटिंग दी अटेंशन कर रहे हैं, तो ये आपने लिंक करना है, प्रायर नॉलेज टेस्ट करना है और पार्टिसिपेंट्स को अप्रिशिएट करना है. याद रखें, अप्रिशिएट करेंगे, इनकरेज करेंगे, बहुत जबरदस्त होगा. अब ये आप सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. अच्छा, फिर आप ये भी करें, आउटकम ऑफ द क्लियरली स्टेटेड, जो भी आपने आउटकम बताना है इसका कि इस सेशन के बाद ये आउटकम होगा. लेट्स से मैं ये कहता हूँ 4 C's मैंने आपको दिखाया इसी के अंदर. अगेन आई एम लिंकिंग टू द प्रीवियस सेशन. 4 C's, these are the benefits we'll try our level best to come up with. 2 के सवा घंटा बड़ा कम होता है किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, टेंजिबल आउटकम के लिए. बट वी केम अप विद दिस कि हाँ जी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, इनकरेजमेंट करेंगे, फलाना करेंगे. सो वी केम अप विद आउटकम कि इस सेशन का आउटकम क्या होगा, और वही आउटकम आपके सामने आ गया, वही आउटकम हम आप लेके चले गए. सो नेक्स्ट इज basically structure of the session explained well, right? जब आप ग्लॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्ट्रक्चर भी बताना पड़ेगा. पार्ट 1 में ये करेंगे, पार्ट 2 में ये करेंगे, पार्ट 3 में ये करेंगे, इतने से बजे इतने बजे तक ये करेंगे. क्लैरिटी हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. आई हैव सीन नंबर ऑफ ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट्स, सॉरी पब्लिक स्पीकर्स, जिनकी क्लैरिटी नहीं होनी करना की है. आई मीन सॉरी आई एम यूजिंग दिस पंजाबी, ओ जी बस्ती कर रहे हैं, हो रहा है चीजें. So this is what they come up with. So I would request you people as a professional public speaker also, or if you want to be, so you need to come up with the clarity. Structure session का well explained होना चाहिए. आप explain करें उसको properly ताकि लोगों के अंदर चीज़ों को क्लैरिटी आ सके और उन्हें पता हो कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, कब सीखने जा रहे हैं और किस किस वक्त क्या सीखेंगे, उसका आउटकम क्या होगा और प्लस कैसे उसको ग्रैब करेंगे. Last not the least, that is stimulate and motivate participant. You must be excited. You need to create that excitement in the next session. कि आपने अगर अगला सेशन अटेंड ना किया तो बस आपकी दुनिया में कुछ और नहीं होगा. So you need to create that excitement. So definitely यहाँ तक तो अटेंशन ग्रैब हो गई, लिंक आ गया, आउटकम क्लियरली हो गई, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो गया, और ये पूरा फॉर्मूला ग्लॉस. रिमेंबर, ये कहीं आपने बैक एंड माइंड आपके चलना चाहिए. ये ना हो कि कहीं आप लिख दें इसको सामने, अपना सीक्रेट दे दें कि आपने पीछे बैक एंड पे कौन सा जो है वो फॉर्मूला चल रहा है. ये तमाम फॉर्मूले जो स्पीकर के नाम पे, ग्लॉस के नाम पे, आपने बैक एंड माइंड अपने लेके चलने हैं. बैक एंड माइंड का मतलब ये हुआ कि जो आपके माइंड के पीछे चल रही चीजें उसको आप लेके चलेंगे. ये नहीं होगा कि आप इसको फ्रंट पे लेके आ रहे होंगे, लेकिन आपको अपने आप को ट्रेंड इसके मुताबिक करना है, इसके मुताबिक अपनी जो है अपने डिलीवरी को इसके मुताबिक लेके आना है. तो स्टिमुलेट करना है पार्टिसिपेंट को, एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है कि यस, in next session we are coming up with more attractive things that will help you in adding value. Now let me come up with this स्टिमुलेट करने के हवाले से, एंगेज करने के हवाले से एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं करवाना चाहूंगा बिफोर वी मूव ऑन टू अनदर फॉर्मूला दैट इज ईज. 3 साइंटिस्ट जा रहे थे एक जजीरे के ऊपर जहां पे तूफान आ गया था. अच्छा, अब जब ये 3 साइंटिस्ट जा रहे थे तो इनके पास, उन्होंने कहा कि हम उस जजीरे पे, उस आइलैंड पे जा सकते हैं थ्रू दिस बलून. अब ये बलून वहां तक जाएगा और हम जो है ना हेल्प करना चाहते हैं. वो 3 साइंटिस्ट कौन थे? उसमें से पहला साइंटिस्ट जो है वो मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर भी था वो, और दूसरा सर्जन था और तीसरा बायोलॉजिस्ट था. राइट, 3 साइंटिस्ट थे. अच्छा, अब जब ये जजीरे से तकरीबन 4 किलोमीटर पीछे ही थे तो ये जो ऊपर बलून है ये फट गया बेचारा, इसमें सुराख होल हो गया और ये डूबना शुरू हो गया. अब 4 से 5 किलोमीटर पीछे थे ये, और दिस इज व्हाट हैपेंड. नाउ आई जस्ट वांटेड टू नो, आप में से, इसमें से, अब मसला ये था कि किसी एक को जंप करना पड़ेगा इन तीनों में से. कैन एनीवन टेल इनमें से तीनों में से कौन जंप पहले करेगा, ताकि लिए वो उस 4 किलोमीटर का फासला 2 बंदे ही कर सकते, ताकि लिए दे कैन हेल्प आउट द आइलैंड जिस पे डिजास्टर्स चीजें हुई और स्टॉर्म आया जिससे नुकसान बहुत सारा हुआ. सो कैन आई सी द आंसर, हु विल जंप आउट ऑफ दीज 3 साइंटिस्ट फ्रॉम द बलून? हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? मार्क्स नहीं कटेंगे.
Mathematicians and the astronaut. Okay, so mathematician, astronaut वाला जो बंदा है वो जो है वो चला जाएगा. Okay, mathematician. Okay, who calculate the risk? Okay, that's great. So he will jump, right? Heather said he will jump. I need more answers. Very good. Two gave two answers now. I need more answer. Amber, Faria, can you hear me? Murad Saab, I need your answer also. Who will jump from this balloon? Scientist. क्योंकि किसी एक को जंप करना पड़ेगा तीनों में से, फिर ही उस आइलैंड तक पहुंच सकते हैं, वरना डूब जाएंगे. बायोलॉजिस्ट, वेरी गुड. ओके, मोहम्मद अली सेज बायोलॉजिस्ट. एनी अदर आंसर व्हिच आई कैन कम अप विद? ओके, मैथमेटिशियन एक और आ गए. सो वी गॉट 3 वोट्स फॉर द मैथमेटिशियन. मैथमेटिशियन वाले जो सारों को मार दिया सबने, मैथ्स वाले तो फारिग हैं. ओके ओके, अगेन सर्जन. ओके, सर्जन विल जंप. ओके, सर सेज सर्जन. ओके, सर्जन अगर करेगा तो डू यू फील वी नीड सर्जन देयर, जहां पे डिजास्टर आया है, नुकसान हुआ है, बिल्डिंगें गिर गई हैं, चीजें गिर गई हैं? ओके, मे बी सर माइट बी राइट इनटू इट. ओके, वी गॉट ऑलमोस्ट लॉट ऑफ आंसर्स नाउ. अब इन आंसर्स की मद्देनजर रखते हुए अब ये देखिए कि इस तरह के ट्रिकी चीजें अगर आप देंगे, लोगों को एंगेज कर लेंगे, लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो उससे ये होता है कि लोग खुद आंसर्स देते हैं. दे ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दिस सेशन आल्सो. एंगेजमेंट ज्यादा हो जाती है. इसका वैसे जो करेक्ट आंसर है वो सबके लिए ये है. असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन जंप करेगा, असल प्रॉब्लम ये है कि वेट किसका सबसे ज्यादा है. ये जो बलून डूब रहा है वो वेट की वजह से डूब रहा है. अगर सर्जन बहुत ही मोटा है तो ही हैड टू जंप प्रॉब्ली, ताकि ये 2 लोग आगे पहुंच सके. अगर जो है बायोलॉजिस्ट बहुत मोटा है तो बायोलॉजिस्ट को जंप करना पड़ेगा ताकि ये बाकी 2 लोग आगे पहुंच सके. तो हैव टू सैक्रिफाइस ड्यू टू द वेट, क्योंकि बलून के डूबने की वजह वेट है. किसी का मैथमेटिशियन होना या सर्जन होना या बायोलॉजिस्ट होना नहीं है. सो नाउ दिस इज समथिंग ट्रिकी क्वेश्चन वी कम अप विद ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और इसी वजह से आते हैं ताकि ये आप लोगों को एंगेज कर सकें. सो आप भी एंगेज करें पार्टिसिपेंट्स को. दिस इज हाउ वी डू इट. दिस इज वन ऑफ द टेस्ट ट्रायल. मैं फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं करवा सकता था, लेकिन मैंने कहा इस तरह की कुछ छोटी मोटे क्वेश्चन और छोटी छोटी एक्सरसाइजेज करवाऊं, स्टिमुलेट कर सके पार्टिसिपेंट को, जो लोगों को इंटरेस्ट डेवलप कर सके. ये जो मेरा टॉपिक है डिफरेंट टॉपिक है. आई एम नॉट टीचिंग हियर, बट आई जस्ट टुक वन ऑफ द एग्जांपल एंड वन ऑफ द एक्सरसाइज इनटू इट एंड try to engage people, जिसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा जवाब भी मिला मुझे. Next sheet. Now coming to the next, before we finish, we have left with almost 15-20 minutes now, more less than that rather. So ease को खत्म करने की कोशिश करते before we move on to the question answer session. Ease is how to conduct. अब ये जो conduct वाला मामला है ना, ये बड़ा ही important है, क्योंकि अब जब आप खड़े हो गए, आपने टेंशन ले ली, आपने ब्रीफ दे दिया, अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, सब कुछ हो गया. अब आपने आना है अगले उसके ऊपर कि उसको डिलीवर करना है, जो आपने एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्ट ई इज एक्सप्लेन. फर्स्ट ई इज एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन देना. आपने एक्सप्लेनेशन उसकी देनी है. अब ये एक्सप्लेनेशन आपकी बड़ी, जैसे होते हैं ना मोती पिरोए जाते हैं, इस तरह आपने मोती पिरो के एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना है. वो कॉन्सेप्ट कैसे समझाने हैं, और ये आपके कॉन्सेप्ट आपकी अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक होंगे. जिसकी जो फील्ड है, लेट्स से अगर यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस के लोग बैठे हुए, ओके, कैन यू प्लीज रिपीट ग्लॉस स्लाइड इन द एंड? ओके, वी विल डू दैट. ग्लॉस वी विल डू. जहां तक एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन मींस अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज द करंट सिनेरियो, और कैसे उसको जो है, जो आपका टॉपिक है उसको कैसे आपने ट्रांसफॉर्म करना है into reality, maybe through PowerPoint और maybe जुबानी, अगर आपके पास इतनी नॉलेज है जो जुबानी भी की जा सकती है. तो एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगी. अच्छा, अब इस एक्सप्लेनेशन को कोरिलेट करें विद द एक्टिविटी आल्सो. दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. अक्सर क्या होता है, जब आप एक्टिविटी के साथ रिलेट नहीं करते ना, तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. जिस तरह जितने भी इंटरनेशनल स्पीकर्स, कंसल्टेंट, ट्रेनर्स आते हैं, मेरे पास भी इंटरेक्शन भी होता है. आई बीन टू 22 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो वो भी एक्सप्लेन क्या करते हैं, वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ले आते हैं इसको अंदर. इसकी लर्निंग ही एक्टिविटी बेस्ड करवा देते हैं. इवन आप स्कूल में चले जाएं, मैंने वो इन सिंगापुर 2003 आई थिंक 2 में बल्कि, तो वहां पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मैकेनिज्म वाज एम्बेडेड इन द स्कूल, और स्कूल टीचर्स का बच्चों को एक्टिविटीज में सिखा जाते थे. सो दैट इज अ ब्यूटीफुल आर्ट. इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर, यू कैन कम अप विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच. अच्छा, इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं,
It all depends on the number of audience. Sometimes आपकी large audience होती है. Let's say if I conduct training program, उसमें large audience भी होती है, 3-3 हज़ार लोग भी आए मेरे एक सेशन के अंदर. अब 1 घंटे का अगर वो सेशन है या 2 घंटे का, तो उसके अंदर मैं एक्टिविटीज उस तरह नहीं करवा सकता जिस तरह करवानी चाहिए. तो उसमें आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही कर सकते हैं. जैसे अब इसके अंदर भी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर क्लोज एंडेड यस या नो कर रहा हूँ. मैं डिटेल्ड वाले क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा होता. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका स्टेज और आगे ऑडियंस कितनी है. हाँ, अगर आपके कम पार्टिसिपेंट है, स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज होगी. अगर आपके बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट है, लेट मी गुड एग्जांपल. अभी मेरा परसों सेशन था, ECS एक चप्पल बनाने वाली कंपनी है वहां पे, और वहां पे 350 एम्प्लॉइज थे. अब 350 एम्प्लॉइज थे, उधर एक्टिविटी मेरे लिए करवाना बड़ा मुश्किल था. दैट वाज अ पब्लिक स्पीकिंग फॉर 1 hour 2 hour. इस तरह के सेशन भी आ जाते हैं. उसके अंदर भी एक्टिविटीज जो है वो इन द नेम ऑफ, आप उसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस के जरिए एक्टिविटीज करवा सकते हैं. छोटी छोटी कोई उनसे करवानी हो तो चीजें की जा सकती है. लेकिन अगर आप 20, 25, 30 का ग्रुप पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर आप एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी जो अभी मेरे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ रही है. वो क्या एक्टिविटी हो सकती है, किस तरह की हो सकती है, जिसपे पार्टिसिपेंट को एंगेज किया जा सके. लेट मी गिव एग्जांपल. अभी लास्ट मैंने सेशन पढ़ाया कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर भी, और जिसमें टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइज करवाई. उसमें मैशमेलो टॉवर बनाना था हम लोगों ने. सो वी एबल टू ग्रुप टुगेदर और मैशमेलो टॉवर बनवाया, चीजें की, और लोगों ने सीखा और आपस में पूरा डिजाइन किया. बकायदा मैशमेलोज को आपस में जोड़ा, और साथ वो स्टिक्स होती है उसकी, क्या नाम है, स्पेगेटी स्टिक्स के साथ उसको मैशमेलो चैलेंज है वो. सो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी विच गिव यू लर्निंग एंड वैलिडेशन इन दैट कॉन्टेक्स्ट. इसी तरह बॉल की एक्टिविटीज होती हैं, ग्लासेस की होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है. सो मेक श्योर व्हाट एवर दिस सेशन यू आर कमिंग अप विद दी, उसकी एक्सप्लेनेशन और एक्टिविटीज को कोरिलेट करके चले, एंड देन एंड पे समराइज करना बहुत जरूरी है. जो भी सेशन आप करवाएं, एक्सप्लेन करें, उसको समराइज करें कि ये चीजें लर्न की. जिस तरह आप इस ईज के बाद सेशन को खत्म होने पे मैं सब चीजों को समराइज करूंगा अकॉर्डिंगली. समरी से ये होता है कि जिसने कोई चीज मिस भी हो गई है गलती से, तो दोबारा हो जाएगी. एग्जाम्पल्स यूज्ड थ्रू आउट द सेशन. अच्छा, अब एडल्ट लर्निंग में सक्सेस उस वक्त है जो हम कॉर्पोरेट लर्निंग या कॉर्पोरेट स्पीकिंग या पब्लिक स्पीकिंग के अंदर करते हैं, कि जब आप एग्जाम्पल कोट करते हैं प्रैक्टिकल, और एग्जाम्पल कोट करते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर से एग्जाम्पल करते हैं. अक्सर मैंने देखा है कि जो प्रोफेसर्स हैं वो घरों की एग्जांपल दे रहे होते हैं. घर में ऐसे होता है, घर में वैसे होता है, घर में ये होता है, घर में वो होता है. मैंने इवन टीवी पे भी देखता हूँ, आते हैं तो वो एग्जांपल जो चल रही होती है मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी, तो वो हर तरह का उनके साथ वाक्य होता है, लेकिन घर ही में होता है, दोस्तों में होता है या घर में होता है. कभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की एग्जांपल्स नहीं दी है. सो इफ यू आर रनिंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम और कॉर्पोरेट टॉपिक है उसका, जिसके अंदर कॉर्पोरेट लोग बैठे हुए हैं, I would request you people to try to bring as many examples corporate level पे, ताकि ये लोग आपको अगली दफा भी सुनने के लिए आए. यदि यहाँ से मिलके जाएगा, यहाँ पे ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जो प्रैक्टिकली हम जाके अप्लाई कर देंगे. हाँ, वालदा ने इसको किया, भाई ने बहन के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना लिया, उसकी एटीट्यूड ये था, उसने करियर को वो कर दिया. इस तरह की चीजें जो है ना, वो आपको कॉर्पोरेट लोगों को अफेक्ट नहीं करेंगे. हाँ, अगर करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके अंदर आप चीजें यूज कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल दी जा सकती हैं. उसके अंदर आपकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, इंस्पिरेशन लोग हैं, इंस्पिरेशन वाले लोग हैं, उनकी एग्जांपल देके लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है. उनकी एग्जांपल्स देके उनको ट्रिगर किया जा सकता है, इंस्टिगेट किया जा सकता है, उनकी स्किल एनहांस की जा सकती है, उनके अंदर मोटिवेशन, स्पिरिट, स्पार्क और चीजों को वैल्यू ऐड किया जा सकता है. सो दिस इज व्हाट द ईज फॉर्मूला इज. अगेन ये बैक इन माइंड रखना है, याद रखें, व्हेन यू वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर, ये बैक इन माइंड चलना चाहिए ताकि ये चीजों को बेहतर बनाया जा सके. नेक्स्ट जी, नाउ कमिंग टू दी कैसे जो है वो एक्सरसाइज दी जा सकती है. आई जस्ट गॉट दिस एक्सरसाइज. आई हैव अ क्वेश्चन टू यू पीपल विच आई वुड लाइक टू नो कि आप लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं. बड़ी इंपॉर्टेंट है. जिंदगी के 1.25 घंटा मैंने आपसे मांगा था, उसमें से सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं. बिफोर वी फिनिश दिस सेशन, लेट मी आस्क यू पीपल, प्लीज फाइंड एंड काउंट ऑल द एंड्स इन दिस लेटर और राइट इट इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले इस लेटर के अंदर एन कितने हैं. कैन यू काउंट प्लीज क्विकली एंड टेल मी हाउ मेनी एंड्स आर देयर? There are 4 ends. How many? Write it down in the chat box.
I want answers in the chat box, please. 1, Let's see everybody's awake or not. 4, 5. 6. Very good. Heather got 6. Now who else? Next. In here. But how come it's 6 here? 0, capital N. Okay. Next. 4, 5. I need answers from everyone. Count all the N's in this letter, please. 0. Excellent. Faria said 0. Very good. I need answers. 6. Murad Saab says 6. So everybody is awake. I'm still looking. There 5. 5. 5. Excellent. Wow. आप भी परेशान होंगे. सारों को मैं excellent कहता हूँ, चाहे 0 भी कहता. Okay, here comes. Sir said 1 N. Okay, excellent. Very good. Excellent. Last Sabha said 5. Okay, and Sir said all are done. Okay, now let me come up with the answer. Can you click the next slide, please? Let me come up with the answer, please. So the correct answer is 10 N's. This is the letter addressed to John Foster, who's a quality engineer, dated this, and this is what the letter is starting from here. This is what it's all about. So look at that. जो अब दिखता है वो कुछ नजर नहीं आता है, लोगों को समझ भी नहीं आता है कई दफा. तो मेक श्योर के वेरिएशंस आर देयर. देखने के अंदाज फर्क है. कोई कहता है कि 0 N है, कोई कहता है कैपिटल N ही कोई नहीं है, कोई कहता है 6 है, कोई कहता है 5 है, और बेसिकली देयर आर 10 N's. Right? So, but late, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं. Amber said 10. Very good. Thank you for answer. Okay, now coming to this, this is the activity. This is one of the activity I shared. So I end today's session with, before this, let me summarize what we started with before I go for this sequence of change poem. Ambasi zara piche kar dena. Let me summarize first before we go on. Okay, we started our journey with one of the photograph. Importance of learning and development is key to success. आपने invest करना है learning and development के ऊपर. That is critical and important. और never think कि आप उसके ऊपर invest नहीं कर रहे, खर्च कर रहे. So that was the journey we started with. दूसरे नंबर पे हम लोगों ने we work with जिराफ को देखा और कहा कि दूर की सोचनी है इंशाअल्लाह ताला. You will be one day a public speaker. You will be इंशाअल्लाह ताला one day with self confidence ripped up होना चाहिए. और जिराफ इस तरह दूर की सोचता है, चीजों को आगे लेके चलता है, इसी तरह आपको भी दूर का सोचना पड़ेगा. अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, अपने अंदर एनर्जी बिल्डअप करनी पड़ेगी, अपने अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, अपने अंदर डिजायर और क्वेस्ट और हंगर पैदा करनी पड़ेगी ताकि लिए यू कैन मूव फॉरवर्ड. एंड देन ऑफ कोर्स हमने फॉर्मूला किया कि स्पीकर का फॉर्मूला अपने जहन में रखना है, अपने बैक इन माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ सेशन. उस फॉर्मूले के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा. देन वी मूव्ड ऑन. स्पीकर के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल. वी वेंट टू द ग्लॉस. ग्लॉस इज समथिंग टू गेट अटेंशन. अगेन बैक इन माइंड ये जरूरी है कि जब भी आप कोई सेशन करें, वो टेड टॉक आती है या दूसरे आते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, वो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं. मैंने अपने कई ट्रेनर्स उधर भेजे, वहां पे ट्रेन करने के लिए भेजे. एक मेरी ट्रेनर थी, उसने रिंग डिस्ट्रीब्यूट किए टू द ऑडियंस. कोई 20-25 रिंग्स लेके गई और रिंग किए कि ये मेरी पहचान है जो मैं आपको दे के जा रही हूं. शी एबल टू गेट होल्ड ऑफ द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. और दोज हु आर वेयरिंग द रिंग विल रिमेंबर हर, मेमोराइज हर कि शी गेव अस अ रिंग दैट शी विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर. दिस इज व्हाट शी गेव द मैसेज राइट इन द बिगिनिंग. सो एवरीबडी हैव इट्स ओन वे ऑफ गेटिंग द अटेंशन. कोई पिक्चर दिखाता है, कुछ करता है, एंड देन वी मूव ऑन टू ग्लॉस के वाले से. एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट we started with ease. Delivery बड़ी important है, explanation बड़ी important है, और उस explanation के साथ आपको क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड बनाना है ताकि लर्निंग ज्यादा बेहतर हो सके. लास्ट नॉट द लीस्ट we did this small exercise जिसके अंदर सारे माशाल्लाह पास हो गए और सब ने आंसर सही दिए, लेकिन सही आंसर 10 था, 10 था एंस के मामले में. वी टेस्टेड द एक्टिविटी इन दैट. इस तरह की इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दे दैट कैन गिव कि हर बंदे की सोच फर्क है, हर बंदे की डिजायर फर्क है, हर बंदे का एम फर्क है.
लेकिन हम लोगों को एक जान होके अपनी क्वालिटीज को इस्तेमाल करते हुए पब्लिक स्पीकर अच्छा बनना है, अपने अंदर चेंज लेके आनी है, और वो चेंज क्या होगी? दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ चेंज. आई एम एंडिंग टुडेज सेशन विद दिस लास्ट पॉइंट dedicated to all of you, and I wish you best of luck with exuberant blessing and benediction. May Allah bless you countless blessing in future too. So sequence of change, the poem is called sequence of change. When you change your experience, you change your thinking. When you change your thinking, you change your expectation. Sorry, let me close the chat box. How to close the chat box now? Okay. When you change your thinking, you change your beliefs. When you change your beliefs, you change your expectations. When you change your expectations, you change your attitude. When you change your attitude, you change your behavior. When you change your behavior, you change your performance. When you change your performance, you change your life. And once you change your life, you change whole society. So I started with my vision statement. I'm ending this session with my mission statement. Life is perpetual endeavors, and endeavors towards peace, harmony, and prosperity. Let us build bridges that are extension of humanity. Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad. Stay blessed. I wish you all best of luck, and I wish everybody to be a professional trainer in Pakistan and deliver knowledge. You will get in return a lot of other knowledge also. Thank you very much once again. Thank you, Basit, for providing the opportunity also. Over to you for the question answer session, please. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. इट वाज वंडरफुल सेशन सर. सवाल जवाब के लिए जो है वो बस जाने से पहले मैंने आप सबको जो है वो एक मैसेज किया है कि अपना कंप्लीट नाम और ईमेल जरूर सेंड कर दें ताकि हम ईच सर्टिफिकेट इशू कर सकें. बस आप सवाल जवाब प्लीज शुरू कर दिए. थैंक यू. Sure, my pleasure. And no questions? लगता है पढ़ाया मैंने ऐसे है कि समझ ही नहीं है. ये समझ आता सवाल है तो प्लीज बताइए. माशाल्लाह सर. सर कोई अभी सवाल तो नहीं मेरा, लेकिन जो ना आपने कहा ना कि ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया इसलिए कुछ सवाल ही नहीं, ऐसा कुछ समझ. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बिल्कुल सारी चीजें जो ना वो क्लियरली बता दी हैं कि क्या चीज जो ना वो हमें करनी है टू बिकम पब्लिक स्पीकर. तो जितनी भी बिल्कुल क्लियरिटी है, बिल्कुल क्लियरिटी थी आपके जो ना वो एक एक चीज में एक एक बात आप कर रहे थे, जो चीज इंशाल्लाह वंडरफुल. हमें सारी चीजें जो ना वो अब जो है वो क्लियर है, और इंशाल्लाह अगर कोई हमें सवाल होगा तो फिर आपका कांटेक्ट डिटेल्स होंगे बादशाह साहब के पास. बादशाह साहब तो फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे. थैंक यू सर. सर मेरा एक सवाल है सर आपसे. जी जी बताएं सर. आप ये एनर्जी लाते कहाँ से सर? आपको मिलती कहाँ से इतनी एनर्जी? माशाल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह. अल्लाह नजर बस से बचाए आपको. ये आज जरा डिस्क्लोज करें सर आप. this is you know training is my passion and consulting is my obsession. So when I started my journey in 1997, so it was my passion to be a trainer. Or in 98, I listened to Faiz Hasan Sial. He was speaking to over 300 people. I went to the stage in 1997 and I said to my teacher, I honor Faiz Hasan Sial Saab ke paas, that one day I would like to be a trainer like you because you got extraordinary communication skills, power, communication, delivery के हवाले से. तो स्टेज पे जाके मैंने काम किया. वो बड़ा परेशान हो गया. एक पार्टिसिपेंट उठ के स्टेज पे आके मुझे ये बता रहा है. And in 2007, with Faiz Hasan Sial, I conducted a training program with 4,800 participants in Alhambra Hall. और इतने लोग थे कि आपकी सोच होगी. And Faiz Hasan Sial repeated the same 10 years back कि जी आपने वो विजन दी थी और आपने कहा था कि एक दिन हम इकट्ठे पढ़ाएंगे और एक सेशन होगा. और आज 5,000 बंदा इस हॉल में खचाखच पड़ा हुआ है. और इधर हसन हैदर ने के बाद मुझे पढ़ाने का ऑनर मिला है क्योंकि वो he just announced this whole story there as a success story in that context. So that is what I have in my heart कि यार पढ़ाना is something, it's an art, no doubt. अल्लाह सुब्हान ताला ने जो स्किल दी है और कुछ मेरी मदर की तरफ से linguistic skill ट्रांसफर हुई हैं. I just अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे. So I just credit to my parents, to my teachers, to my all elders and to all my foreign qualified teachers also. जब मैं देखता था बचपन में भी और यूनिवर्सिटियों के अंदर भी
कि यार वो बस टाइम ही देखते रहते थे, या अल्लाह कदों मुकेगा। तो मैंने कहा ये काम मैं नहीं करूंगा इंशाल्लाह ताला। सो आई कीप द माशाल्लाह। एनर्जी राइट ऑन द पोटेंशियल एंड ये नहीं होगा कि एनर्जी डाउन होनी चाहिए, एनर्जी अप होनी चाहिए, विद विजन, विद स्पिरिट, स्पार्क, मोटिवेशन। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। Excellent, sir. Zabardast, sir. Thank you so much for sharing the secret, sir. Okay, let me come up with Heather said, can I answer? Somebody say कि जी want to see gloss slide. Who said that? Faria. So can we come up with the one by one questions को जवाब दे देते? Faria said gloss slide को देखना है. Okay, can you bring that slide there? I would बासित रिक्वेस्ट कि आप इसका जो है ना PDF वर्जन जरा शेयर कर देना सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ ईमेल के जरिए। ओके सर, ठीक है। और अगर कोई इस प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट पे भी मांगता है तो वो भी शेयर कर देना, मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर कोई मेरा ही कोई और पढ़ा रहा हो, सिर्फ मुझे याद कर लीजिएगा बस, बाकी कोई नहीं, और दुआओं में याद रखिएगा जैसा बासित हमेशा रखता है। सो अगर कोई पावर पॉइंट मांगे पावर पॉइंट दे देना, अगर कोई PDF मांगे PDF दे देना, जिससे दे इंफॉर्मेशन का फ्लो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम सिखाएंगे तो बेहतर होगा और हमारी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक हो गया? ठीक है सर, थैंक यू सर। So what is the question, Freya? We got this slide for you. So any question with this? Freya Hasan, we are waited for the questions, please. Okay, meanwhile, I can answer the next question. I just wanted to see it because I had missed the last two parts. And one thing, sir, in my 38 years of training also and working also, you're one of the first person I met who is ready to share information so easily. वरना यहाँ पे unfortunately problem ये है कि लोग अपनी knowledge अपने तक ही रखते हैं। नहीं, तो hats off to you, sir. माशाल्लाह से। नहीं, जितना देंगे मेरी बढ़ेगी, बल्कि आप जब भी आप कुछ कामयाबी हासिल करें प्लीज मुझसे शेयर करें, शायद मैं आपसे लर्न करूंगा। मैंने ये कहा था कि 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक नहीं है। जिस दिन मैंने ये सोच दिया ये 1 वे ट्रैफिक है, तो उस दिन शायद मेरी लर्निंग खत्म हो जाएगी। आई एम ऑलवेज लर्निंग, और जब आप गिव करते हैं तो आप रिसीव भी करते हैं उधर से। इंशाअल्लाह ताला आई विल कंटिन्यू विद दैट टू, एंड बासित नोज माय नेचर इन दैट कॉन्टेक्स्ट। Now coming to any ice breaking techniques. Okay, ice breaking techniques are बहुत सारी हैं। कुछ गेम्स खिलवा देते हैं शुरू में, और आइस ब्रेकिंग का मकसद क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। फिर देन यू कैन कम अप विद दी टेक्निक्स आल्सो। आइस ब्रेकिंग का ये होता है कि लोग जब आते हैं ना, कई नए नए पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो वो ना रिलक्टेंट होते हैं एक दूसरे के सामने बात करने से, डिस्कशन करने में। उन्हें फियर फैक्टर होता है, उस फियर फैक्टर को खत्म करना है। तो इस फियर फैक्टर को हम गेम के लाके भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक और होता है कि एक और तरीका आपको बताऊं कि शुरू में पार्टिसिपेंट्स के एक दूसरे के सीने पे ना उसका इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। फिर एक तरीका ये भी होता है कि जी आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराना, अपने साथ वाले को इंट्रोड्यूस करवाना है। अब वो जब साथ वाले को इंट्रोड्यूस कराना है, उनको नोट्स लिखने पड़ते हैं, यार आप क्या करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कितनी, अब ये यू ब्रेक द आइस, राइट? दीज आर द फ्यू टेक्निक्स। अटेंड माय TOT प्रोग्राम, 4 दिन का सेशन है, ये तो सवा घंटे में मैं इतना ही बता सकता हूँ, लेकिन वी प्रैक्टिकली गो फॉर सच काइंड ऑफ एक्सरसाइज। हाउ टू चेक दिस सेशन इम्पैक्ट, वेदर इट वाज सक्सेसफुल। evaluation फॉर्म्स होते हैं नॉर्मली इन द एंड सर्कुलेटेड। इम्पैक्ट उसका उससे हम कैलकुलेट भी किया जा सकता है। उसके अंदर आप एक मीटर बना दें कि बिफोर दी ट्रेनिंग जब आप आए थे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक थे, तो उसमें 10 में 2 पे थे, तो आफ्टर दी ट्रेनिंग किधर है, तो इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग आपका रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। क्वालिटी, कुछ KPIs बना लें कि हाउ वाज द कंटेंट, हाउ वाज फलाना, उसके अंदर भी गुड पुअर बैड हम नॉर्मली ये यूज कर रहे होते हैं थ्रू द इवैल्यूएशन फॉर्म्स। अगर आप लोगों को वो भी चाहिए होंगे, हम अपनी कंपनी के भी देने को तैयार हैं, बासित को शेयर कर देंगे। अगर इफ दे नीड वी कैन शेयर द इवैल्यूएशन फॉर्म्स, ताकि ये आपको पता हो कि जब भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म करेंगे तो कैसे चीजें उसमें आपका इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या हुआ। अच्छा, अब इसमें भी 2 किस्म के इम्पैक्ट हैं। कुछ हमारे ट्रेनिंग इन हाउस सेशंस हैं, जिसमें अब मैं अभी रिसेंटली 3 दिन का सेशन मैंने पढ़ाया है, और तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सेविंग जो है, 10 मिलियन की सेविंग, ओवर 10 मिलियन की सेविंग हमने आइडेंटिफाई की है। हमारा एक ग्रुप है बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का इन इस्लामाबाद। वी हैड अ 3-day इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉस्ट रिडक्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, और उसका जो इम्पैक्ट और आउटकम था ऑफ द ट्रेनिंग वाज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स।
Let me quote example. I came to Yamaha इधर कराची में हब में एक से उनके वेंडर को पढ़ा रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि आप अगर लाख रुपया 1.5 लाख रुपया चार्ज कर रहे तो किस बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं, और आई नॉर्मली चार्ज अराउंड, ये पुरानी बात है कि मेरा थोड़ा सा इससे ज्यादा ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतना तो नहीं हम देते, यहाँ पे तो हम 5,000 10,000 रुपये में ट्रेनर बुला लेते हैं, चीजें हो जाती हैं। व्हाट आई सेड कि ठीक है आप मुझे कुछ ना दे, सिर्फ ये होगा जो भी मैं उसका इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग होगा, जो भी वेस्टेज आइडेंटिफाई हो जाएगी, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसका 2% मुझे दे देना। अच्छा, वो मालकान फौरन तैयार हो गए देने, जी ठीक है 2%। अब उनको नहीं पता था कि मैं तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब उनका वेस्टेज और वो चीजें आइडेंटिफाई कर दी। अब जब वो 1.5 करोड़ का 2% निकाला तो वो बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा जी आप वो जो कह रहे थे ना वो ही ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। आप अगर कोई डील करें एज अ ट्रेनर, इस तरह की भी चीज डाल दें जिसके अंदर कहनी इस ट्रेनिंग के बाद ये इम्पैक्ट आएगा और उस इम्पैक्ट का इतना परसेंटेज मैं लूंगा। मेरा एक शागिर्द इसने सियालकोट में इसी तरह किया, नस्ट ग्रेजुएट है वो बेसिकली और नस्ट में पढ़ाता भी अब, और उसने सियालकोट में एक गाड़ी उसने ट्रेनिंग की फॉर्म में ली इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग के नाम पे कि इस ट्रेनिंग के बाद आपका इम्पैक्ट ये आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे होंगे। तो कुछ ट्रेनिंग के फाइनेंशियल गेन्स भी मिलते हैं, कुछ के मॉरल गेन्स मिलते हैं, कुछ के नॉलेज गेन्स मिलते हैं, कुछ के कुछ मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी टू कंपनी एंड ऑल दैट स्टफ। ओके सर ये टेक्निक आपकी मैंने भी यूज की है सर, मैं अपने क्लाइंट के साथ सर आपकी यही चीज अप्लाई। जी बिल्कुल सर, ये जो आपने बताया ना सर, ये जो पॉइंट है आपने पहले जब हमें ट्रेन करवा रहे थे ना सर आप ट्रिपल टी, तो उसमें भी आपने ये चीज बताई थी उस वक्त। तो सर आई एम अप्लाइंग इन दिस एंड इट इज गिविंग मी अ वेरी गुड रिजल्ट्स विद द क्लाइंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। How did you overcome the hecklers problems? अच्छा मानकर आप जो ओके कुछ लोग होते हैं बेसिक, इसके लिए आपको ना थेरेपी करनी पड़ती है, मिरर थेरेपी। आई डोंट नो how many of you know mirror therapy in that context? एक्चुअली सर मिरर थेरेपी जो है सर वो जैसा गेस्चर बॉडी का, आई थिंक सो सर, जैसा गेस्चर वो अपोनेंट दे रहा होता है वही गेस्चर आप रिपीट कर रहे होते हैं या सॉर्ट ऑफ अ रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। दिस इज आई थिंक यू आर आस्किंग सर। हाँ, ये बेसिकली अब हैकलर्स भी होते हैं और कुछ डीमोटिवेटर्स भी हो रहे होते हैं जो डीग्रेड कर रहे होते हैं पार्टिसिपेंट। दो किस्म के लोग हैं जो आपको अक्सर व्हेन यू हैंडल द डिफिकल्ट पीपल, हिचकिचाहट जिसको कहते हैं ना, अंदर हिचकिचाहट आ जाती है, लोगों के अंदर फियर आता है, ये चीजें, ये होता है मिरर थेरेपी से आप अपने ही प्रेजेंटेशन शीशे के सामने दें, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा तरीकाकार है रिकॉर्डिंग करें अपनी और दोबारा सुने, एंड दोबारा करें, दोबारा सुने, 4, 6, 8, 10 दफा करेंगे, डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। बिसाइड दिस, जहां तक आपको डीमोटिवेटर मिलते हैं, डिग्रेड करने वाले लोग मिलते हैं जो आपको कहते हैं नहीं कर सकते, फलाना कर सकते हैं, अवॉइड नेगेटिव पीपल। जितने दूर रख सकते हैं ऐसे लोगों से दूर रखें, ये लोग आपके लिए जिंदगी के लिए जो है ना वो खतरनाक है। So always interact with the positive people who motivate you, encourage you, share values with you, maybe helpful to you। इस तरह के लोगों से आप इंटरेक्शन करें, that would be rather better। और प्लस अगर डीमोटिवेटर ड्यूरिंग दी सेशन आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है, और वो हर दफा सवाल पूछते हैं, आपको फंसाने के लिए सवाल पूछते हैं और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछते थे, जी ये सवाल है जी ये, उसका ताल्लुक भी कोई नहीं होता कंटेंट से। तो ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं, डिफिकल्ट पीपल इस तरह के। तो ऐसे लोगों के लिए आपने एक चार्ट अलहदा ट्रेनिंग के दरमियान रख लेना है और उसका नाम दे देना पार्किंग लॉट। तो ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछे जाएं, आप उस पार्किंग लॉट में लिख दें कि वंस वी फिनिश दिस सेशन वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक हो गया? So this is what few examples are. I wish I can have TOT soon announced in Karachi. तो बात आपको मैं शेयर करूंगा ताकि इसको डिटेल के अंदर हम जवाब दे सके चीजों को डिटेल में, एक्सरसाइजेस के जरिए भी। वी हैव ऑल एक्सरसाइजेस अवेलेबल, केस स्टडीज अवेलेबल, हम लोगों ने सब चीजें डिजाइन की हैं प्रोफेशनली ताकि लोगों को हर तरह के ऑडियंस से हम उनको काबू करने की प्रैक्टिस करवा सके। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है सर। और बासित उसका ट्रेनर होगा बाय द वे टीओटी का। गेट रेडी बासित। आई वांट यू टू। सर आपने मुझे जना, सर आप मुझे जना बिल्कुल पछाड़ देंगे।
बड़ा मस्त इम्तिहान होगा सर ये मेरा आपके सामने सर. I know your daughter Thank you, can do it. I know thank your you, sir. daughter can do it. She can play a very positive role, inshallah, and she will be very good communicator in future too. You like it? What did you learn today? What Thank was you. your learning today? I was learning how to be a better speaker. Be confident, But did you don't be learn shy, that? be strong. Yeah, I did learn it. Okay, so you are confident now I to learned speak? it. Yes, I am confident now. Okay, so I hope you will be the brain scientist rather than the brain surgeon today, right? Yes, I'm sure. Okay, that's great. So I I'm wish you best of confident a luck. lot. Okay, that's Thank great. you a lot. Thank you, sir. Thank you. Any of you would like to be the okay, so any other question you have in your kidneys? Any other question? Let me check all are with me or not. Any other question in your kidneys, please? Is it your kidney? Just want to see smiling face. So my kidney. Sir, Zabardast, sir, it was a wonderful session, sir. Mashallah, sir. Thank you so much for giving us a time, and it was wonderful learning experience, mashallah, with you. And Joby, whatever you have shown us, whatever you have shared with us, you are the living example for us. आपने हमें apply करना सिखाया, आपने उसको apply खुद करके बताया, आपने example दी हमें, तो बहुत आसान हो गया बहुत सारी चीजों को देखना, सुनना और समझना हमारे लिए. Because you did it first, तो इसमें जो है ना वो हमें हमारे लिए बड़ा helpful रहा. ये this is my feedback, and always sir, you are my respected sir, and आप हमेशा से amazing रहे हैं sir. अल्लाह आपको नजर बद से बचाए और हमेशा यूं ही आप जो हैं sir हमें अपने जो है इनसे फायदा दें sir. Sorry, I'm just cutting you. Let me request everyone जो भी यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, एक point which they learned today and they will take them with them to apply. One point they have to speak out. I would like to see how speaking confidence being built up. So let's make it more. First point. Only one the point. The first point is be confident. Be confident. Okay. Okay. Murad Saab, Ji, Haider, कोई भी unmute करके please give one thing which you learned today. One the best thing which you are proud of. Sir, this is Haider. बात कर. Sir. Passionate. Okay. Okay. Sir, Next. मैं बता सकता Haider. जी. Sir, the main thing जो आपने बताया है कि yes, I can do it. सबसे पहली चीज जब मैं अपने आप से खुद मैं अपने आप को convince कर लूं, then I can convince others. So this is very much important that I can do it, and then we'll start. Okay, that's great. Very good. Murad Saab. Other point is be strong. Seher, Murad Saab is coming in. Ji Murad Saab, one thing which you are proud of and you learned today. The formulas. Ji? The formulas you told us. The formulas. Okay. Formulas are the key learning. Very good. That's great. Seher, can you answer, please? Sure. Sure. Thank you so much for giving me the opportunity to attend the session. First of all, I am proud of my kindness. Like I'm always trying to be kind with people. And the thing I've learned today in this session is that knowing your audience, people always start speaking without knowing their audience and tell about their interest without even knowing even people they are speaking to is actually interested in their conversation or not. So today I actually learned this that first know your audience and then speak. Okay, very good. इसमें एक चीज मैं जरूर से ऐड कर दूं, इसी know your audience के अंदर हम लोग ये भी करते हैं. When I go to other cities, I know the city also. कि इस सिटी के बारे में अच्छा क्या है, यहाँ पे बेस्ट चीज क्या थी, ताकि ये उधर के लोगों को मैं ज्यादा अट्रैक्ट कर सकूं. So it's not only knowing the audience sitting inside the hall, but around the hall also, what they are and what they like the most need to be discussed, ताकि we value it. Right? And we get the interest of that. This is what validation to that particular thing too. Okay, who else? Muhammad Ali. Yes, Muhammad Ali. I think he's not here or busy. Amber, you didn't speak at all. So but you answer well. 10 and आपने count किए. Are you with us? No. Assalamualaikum everyone. What I learned. आप सुन सकते हैं मुझे?
Yeah, I can Hello. hear you. Okay. So what I learned is at icebreakers and energizers. This is one thing that can actually gain basically the attention of the audience, and this is how you don't lose attention. This is one thing I learned actually. Okay, wow, that's great. Ji Faria. जी सर दो चीजें सीखी हैं मेन चीज एक तो ऑडियंस ग्रैबिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड एंड लाइक यू सेड आउटसाइड द वर्ड नोइंग व्हाट देयर लाइफ इज लाइक so you can really connect with the audience and secondly the formulas sir I can have my own selfie with it so that I can put a record on it. Excellent. This is the only way. When you're alone at home, what is the solution? Okay, very good. You said two things you learned. One is knowing your audience formula, and second thing, sorry, I missed. the formulas sir Formulas, very good. That's great. Any other left? I think Heather said it will be easy to remember these things. Majid and Mohammed Ali is not there now. I think Majid, what did you learn today? Any one thing? Yeah, thank you so much for this session, sir. Actually, जो मैंने जो थोड़ा सीखा है, एक तो self confidence होना जरूरी है for public speaking and knowing your audience. I mean, ये बहुत important चीजें हैं जो मतलब आपने अगर public speak करना है तो ये चीजें होना जरूरी है. No doubt. Okay, thank you very much. I think all are clear now. I'm happy. People have question hunger. Inshallah ताला इसी question hunger को आगे रखें और become a speaker और move forward as much as you can. And इसके लिए chocolate भिजवानी पड़ेगी छोटी daughter के लिए हमारी. So special chocolate or gift coming from here. दुआ करें कि I'll be coming to Karachi without any corona. Thank you a lot. Whenever I plan, my pleasure. Whenever I Thank plan you. Karachi, Corona chips in, so I just get afraid sometime now. Okay, जी, thank you very much for everyone. नहीं अल्लाह आसानी फरमाएगा सर, आप बिल्कुल दिल खोल के. ठीक है, thank you जी, thank you very much. थैंक यू सर. मैं कंक्लूड करता हूं सर आपकी परमिशन से सर. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप आए सर मेरी रिक्वेस्ट में सर. हम्बली थैंकफुल, यू हैव गिवन अस एन ऑनर. इट वाज अ वंडरफुल सेशन सर. मैं आप सब लोगों का शुक्र अदा करता हूं और शुक्रिया जो है ना करता हूं कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए. हैदर साहब, सहर, माजिद साहब, मुराद साहब, अली साहब, अंबर साहिबा, फारिया साहिबा, सबा खान साहिबा और जो है वो शाहजहान साहब. तो ये जितने भी लोगों ने कनेक्ट किया, अपना टाइम जिंदगी का दिया हमें, थैंक यू सो मच. यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे. अल्लाह से दुआ है जाने से पहले इस इल्म को इल्म ने नाफे बना दे हमारे लिए और इस इल्म के शर से हम सबको महफूज करे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.